The baseline is granted to the extent of allegations. लॉर्डशिप एक प्रमोशन हमको नहीं दिया है प्रमोशन के लिए, प्रोसेस का वायलेशन करते हुए, उसके लिए लॉर्डशिप हम यहाँ पे हैं। लॉर्डशिप एनेक्सर P1 पेज नंबर 16 जी। वन पोस्ट से किस पोस्ट पे प्रमोशन चाहिए था? सर स्केल 3 to 4 सर, 4 स्केल 4 to 4। अब आप रिटायर हो गए हैं कि सर्विस? सर रिटायर हो गए जी सर। 157 वैकेंसीज डिक्लेयर हुई थी स्केल 4 के लिए, और उसमें जोन ऑफ कंसिडरेशन 1:2 का 1:3 का चाहिए था, तो 314 पोस्ट आना चाहिए थी, लॉर्डशिप वो नहीं आई। 1:2 है, देखिए। नहीं सर, ये इसके पेज नंबर 2 पे आएंगे, 17 नंबर पेज पे 3 to 4 के लिए 1:3 का है। Then what happened? 1:3 है। इसमें तो That's what is mentioned, but here there's a gap. 1:3, but I'll come to that now, Lord. Let it finish. There is no dispute as to 1:3. Yeah. ठीक है। तो वो इन्होंने फॉलो नहीं किया यहाँ पे। So the total number of vacancy, number of persons to be considered should be 157 into 3. Yes. About 450. Yes. Lordship. 471. 471 या 479. ठीक है, फिर Only 259 have applied. 259 have applied. You are among them. Yes. Then what happened? Subsequently, Lordship, page number 18. For being eligible for promotion, the candidate must secure minimum 60% marks in APR during the previous 3 years for the 2015, 16, 17. लॉर्डशिप पे बेसिक एलिजिबिलिटी है कि हमारे को 60% मार्क्स होना चाहिए। 2017 की APR आई नहीं, लॉर्डशिप आई नहीं, और इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन बुलवा ली, सबकी एग्जाम भी कंडक्ट कर दिया और फाइनली डिक्लेयर भी कर दिया। इसका पेज नंबर लॉर्डशिप 19 कंट्राडिक्शन देखिएगा। However, it should be noted that the eligibility of promotion is provisional and the final eligibility for promotion would be decided on the basis of their fulfillment in March. Means 2017 की इनके पास नहीं आई थी। आ नहीं सकती क्योंकि 26 मार्च का नोटिफिकेशन है, APR तो 31 मार्च के बाद ही आएगी। That's why the clause लेके आए ना, my lord। नहीं तो ये clause लाते लॉर्डशिप। Then what happened? Subsequently, लॉर्डशिप इसी भी पेज नंबर 19 में promotion from 3 to 4 के लिए for being eligible for promotion, a candidate would be required to clear written test interview separately. इसके नीचे पॉइंट नंबर 3 लॉर्डशिप ये इंपॉर्टेंट है, वेटेज टू डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ मेरिट लिस्ट। अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट इनको बनाना चाहिए थी, इन्होंने लिखा कि इस परसेंटेज में बनाना चाहिए थी। रिटन टेस्ट के लिए 25% 25 मार्क्स का वेटेज दिया, APR के लिए 25 के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू के लिए। आउट ऑफ 150 मार्क्स का जो इन्होंने अलॉटमेंट किया, इन्होंने अपने पास रखा। लॉर्डशिप की ऑलरेडी ये डिसाइड किया, कई जजमेंट्स में आया हुआ कि मोर देन 15% ये नहीं हो सकता इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में, ये इन्होंने रखा हुआ लॉर्डशिप। इसको और क्लियर करते हैं लॉर्डशिप, इनकी जो वो है HRM पॉलिसी लॉर्डशिप, उसके पेज नंबर पेज नंबर 123 एनेक्सर P31। मेरिट लॉर्डशिप 123 लॉर्डशिप। E point number E, a merit list on the basis of aggregate marks secured by each candidate shall be prepared and final result shall be declared by the department promotion committee with the approval of Hon'Ble chairman and managing director in his absence of Hon'Ble executive director. So it is mandatory कि इनको merit list बनाना चाहिए। लॉर्डशिप इसके बाद ये एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किया और उसके बाद इन्होंने रिजल्ट रिटन टेस्ट का डिक्लेयर किया। उसके बाद 28/7 को इन्होंने GD के लिए ग्रुप डिस्कशन कॉल किया और 29/7 को इंटरव्यू। ये 29/7 को इंटरव्यू करने के बाद लॉर्डशिप पेज नंबर 24 एनेक्सर P3 यस, विदाउट प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दी लॉर्डशिप। Only 53 जी, only 53 और लॉर्डशिप इसमें से
ये जो 53 है, 53 में से 50 मुझसे जूनियर है। लॉर्डशिप, मेरा क्लेम इसमें जो है वो है, लेकिन लॉर्डशिप ये इम्पोर्टेंट है कि ये मेरा मेरिट लिस्ट बनाए, ऐसे लिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, इसमें ये भी नहीं पता चलता कि किसको एपीआर में कितने मार्क्स मिले थे, इंटरव्यू में कितने मिले थे, जीडी में कितने मिले थे, किसमें क्या मिले थे। तो ये टोटली अनफेयर है। ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लॉर्डशिप हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया 27 5/2017 को। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन लॉर्डशिप एचआरएम पॉलिसी का पेज नंबर 126। Given redressal, the officer agreed with the decision of DPC may make a representation to the relevant standing DPC within 45 days of the declaration of result. लॉर्डशिप ये हमारा 45 डेज के अंदर करता। सब्सिक्वेंट इसका पैरा में 126 में कहाँ आपका ग्रीवेंस जी किस पेज पर है? 27 P4। इसका सब्सिक्वेंट पैरा जो है लॉर्डशिप, द रिप्रेजेंटेशन शेल बी एग्जामिन्ड बाय द स्टैंडिंग डीपीसी इमीडिएटली बट इन एनी केस बिफोर कंप्लीशन ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा इन्होंने डिसाइड नहीं किया। जी जी। इसका हमने इसका रिमाइंडर दिया पेज नंबर 28 एनेक्सर P5। हमारे लेटर 5/8/2017 का इन्होंने रिप्लाई दिया लॉर्डशिप, पेज एनेक्सर P29 पेज। ये कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन हमको मिला ही नहीं आपका, और आपने 45 डेज में नहीं दिया, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करें। जबकि ये इनका एक्नॉलेजमेंट है, इनकी सील है, इन्होंने रिसीव किया इसको। लॉर्डशिप, इसके बाद हमने 6/11 को एनेक्सर P7 में उनको बताया कि नहीं हमने दिया, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट। मेरिट स्पिन का क्या कहना है? जी, मेरिट स्पिन का क्या कहना है? आपकी केस की मेरिट स्पिन का क्या कहना है? इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इन्होंने ये कहा है कि हम 2017 के बाद 2018 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इसलिए हमारा चांस चला गया 2017 के लिए हम क्लेम करने के लिए हक। उन्होंने कुछ कहा होगा कि 17 में आपका रिजल्ट क्या रहा, कैसे रहा, आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? सिर्फ एक ही रिप्लाई दिया इन्होंने रिप्लाई में अपने, कि हमें 25 में से 10 मार्क्स मिले थे, जबकि हमको 40% मिलना चाहिए थे इंटरव्यू में। इंटरव्यू यस, 25 में से 10 तो 40% हुए। 50% मिलना चाहिए। 50% मिलना चाहिए, 12.5 मिलना चाहिए। 12.5। जबकि हमको रिटर्न में 51% मिले हैं, एपीआर में 75% मिले हैं, ग्रुप डिस्कशन में 100% मिले हैं। इंटरव्यू में आपको क्वालिफाइंग से कम मिले हैं। ये ऐसा इनका कहना है। लॉर्डशिप, हमारा कहना है कि हमको 100% मिले हैं, इनका कहना है कि हमको कम मिले हैं। दस्तावेज इनके कस्टडी में लॉर्डशिप, इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो दे डिजर्व एडवर्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट देम। इनको प्रूव करना था, और हमने जब डॉक्यूमेंट मांगे लॉर्डशिप, तो ये कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट देना जरूरी नहीं है। सिमिलरली लॉर्डशिप, हमने 2018 में अप्लाई किया, हमको रिलीव नहीं किया इंटरव्यू के लिए उन्होंने, और सेम वहाँ मेरा मेरिट लिस्ट बनाया 2018 में भी इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। 18 की मेरिट लिस्ट कहाँ है? आपको पहले लगी होगी। नहीं, ये P27 एक पेज नंबर 104 P27 P27 ये लॉट। जबकि इट्स मैंडेटरी कि इनको मेरिट लिस्ट बनाना है एज पर पॉलिसी।
you apply Yes, I had applied. and not relieved? I have not relieved. Please, why did you not relieve him? My lord, my lord, there's a sheer concealment of facts. My lord, what happened in 2018, promotion policy, he got proper marks in written taste. And after that, my lord, annexure P25, page number 101 may kindly be perused. And he was informed that he was required to appear for the group discussion interview on 24/4/2018 at head office Pune. But he, on his own volition, he did not appear. So after that also he thinks, and in the relief clause also he said that he is required to be promoted. My lord, annexure P26 may kindly be perused. His letter, 20th April 2018. Is there, my lord? 20th April 2018, written by the petitioner only. Interview for promotion from scale 3 to 4, scheduled on 24th April 2018. My request clarification for my posting upon my selection in scale 4. Sir, in response to the circular dated such and such, I applied for promotion process on scale 3 to scale 4 and being qualified in an exam held on 24th April 2018. I've been informed on 19th April 2018 that the GDN interview is scheduled on 24th April 2018. You are scale 3 Rajbhasha, लॉर्डशिप, not general banking. लॉर्डशिप, मैं जनरल बैंकर था. बाद में स्केल 2 में इन्होंने इंटरनल पोस्ट निकाली राजभाषा की, और उसमें मैं इंटरव्यू के थ्रू इन्होंने मुझे लेटरल इंडक्शन हो गया आपके राजभाषा में. लॉर्डशिप. My lord. That is also not a correct fact, my lord. That is also not a correct fact. He was never, because my lord, he joined the service of the bank on 27/11/79, my lord, annexure 5.1, reply to as to para 5.1, page number 6 of my reply. There is no Rajbhasha catered cell with the responded to at the zonal office Jabalpur. So the petitioner joined the service of the bank on 27/11/79 as young clerk, posted at Hamidia Road branch, Bhopal. He was promoted as deputy manager general officer on 20th October 2001 and posted as branch officer at Bordahi branch, Bhopal on 2/1/2002. He was transferred to Golaka Mandir branch, Gwalior on 10/6/2002 as general officer. The later, the petitioner was transferred to Nandora branch on 8/12/2003. That the petitioner was never a specialist officer. The petitioner was among the ones selected to work in the Rajbhasha department, and his services are available only for his knowledge in Hindi. The petitioner posted as zonal office Goa, and after that zonal office Jabalpur. But the thing is that his services was taken at that. But the thing is that he was never joined and he was never selected as in the post of Rajbhasha officer. So it is not that he and the thing is that it's not that he was not aware to what will be the eligibility criteria and what will be the qualifying marks. How you are Rajbhasha officer? लॉर्डशिप, How you are Rajbhasha officer? लॉर्डशिप, मैंने जो एप्लीकेशन फाइल की प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसका पॉइंट नंबर H, इंस्पेक्शन क्वेश्चनर सबमिटेड बिफोर द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज डेटेड 8/11/2004 बाय You say you are Rajbhasha officer. You must be having your appointment order, promotion order. आप राजभाषा अधिकारी हैं तो आपके पास आपका नियुक्ति पत्र है लॉर्डशिप. वो हम लगाना रह गया. हाँ, वो है हमारे पास. कहाँ है बताइए. नहीं, इसमें लगाया नहीं लॉर्डशिप, वो रह गया. राजभाषा वाला है कहीं पे कि राजभाषा अधिकारी पे आपको नियुक्त किया जाता है. लॉर्डशिप, लेकिन ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी जब आती है वहाँ ये जो क्वेश्चनर देते हैं लॉर्डशिप, उसमें लिखते हैं कि हम राजभाषा अधिकारी हैं. ये क्वेश्चनियर में दे रहे होंगे आप काम कर रहे होंगे वो वाला. नहीं, लेकिन हमारे को अपॉइंटमेंट भी मिला हुआ है लॉर्डशिप, हमको लेटर भी मिला हुआ है. कहाँ है लेटर? वो इसमें लगाया नहीं लॉर्डशिप, रह गया. हमें टाइम दे दीजिए, हम लगा देंगे. मत लगाइए, लेकिन आप काम करने को बोला होगा राजभाषा. नहीं सर, हमारा सिलेक्शन हुआ, प्रॉपर वैकेंसी निकाली, हमको इंटरव्यू के लिए कॉल किया. बताइए आपके पास है, फाइल में है ऑर्डर? इसमें नहीं है लॉर्डशिप, मैं लगा दूंगा, मुझे एक दिन का भी टाइम दे दीजिए. ठीक है. हमको इंटरव्यू के लिए कॉल किया लॉर्डशिप, हम यहाँ से जबलपुर से पुणे इंटरव्यू के लिए गए, हमको सेलेक्ट किया गया और हमको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया. तो ठीक है, फिर तो आपका राइट ही नहीं है. इस पर जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स हैं. लॉर्डशिप, इसमें ऑप्शन है. 4 में कैसे जनरल बैंकिंग में आएंगे? नहीं, इसमें ऑप्शन है लॉर्डशिप कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं. सर्कुलर में ऑप्शन है. कहाँ है ऑप्शन बताइए.
Page number 20. Specialized officer applying for promotion may opt either a special paper consisting of 50% question, they are subject to specialization, 50% question general, or a paper consisting all question. कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं आप? 7 number. स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, यस. आपने किस में अप्लाई किया था? हमने जनरल में अप्लाई किया था. जनरल में. जनरल में अप्लाई किया. और आपने P26 का लेटर क्यों लिखा? P26 का लेटर आपने क्यों लिखा जब जनरल में अप्लाई किया था? नहीं, हमने जनरल में अप्लाई किया, बट हम ये ऑप्शन था कि हम जनरल में अप्लाई कर सकते हैं स्पेशलाइज होकर के भी. तो फिर आपने P26 का लेटर क्यों लिखा? नहीं, बिकॉज लॉर्डशिप, क्योंकि हमें पता था कि हमने रिप्रेजेंटेशन दिया 2017 के प्रमोशन के लिए, तो ये रिवेंजफुल है और हमको कहीं ऐसी जगह फेंकने वाले हैं, इसलिए हमने लिखा है लॉर्डशिप. ये तो आपने नहीं लिखा कि रिवेंजफुल है इसलिए हम नहीं जा रहे. आपने ये लिखा है कि हमें मालूम नहीं हमें किस में अप्लाई करना है. नहीं, ऐसा नहीं लिखा लॉर्डशिप कि हमें मालूम नहीं. नहीं, ऐसा नहीं लिखा. हमने ये लिखा है कि हमको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी और हमको किस में रखेंगे. आप खुद ही कहा कि आप जनरल बैंकिंग ड्यूटीज करने के लिए सक्षम नहीं हैं. It will not be possible for me to perform the work of general banking as I was kept away from general banking since 8/12/2003 by the bank. Is P26. Page Hon'Ble number. letter. पेज नंबर. Page number 102. आप ही कह रहे हैं कि हमारा राइट है राजभाषा अधिकारी की कैडर में आगे प्रोसीड करने का. जनरल बैंकिंग ड्यूटीज हम कर ही नहीं पाएंगे. Second paragraph. अंडरलाइन भी किया आपने इसको, केवल लिखा भर नहीं है, वो आपने काफी हाईलाइट किया. लॉर्डशिप, हमने अप्लाई किया वहाँ पे, सिलेक्ट होने के बाद भी हम राजभाषा में स्केल 4 पे आते. No, you say it will not be possible for me to perform the work of general banking. Yes. So then your non-promotion is good. नहीं, स्केल 4 हम राजभाषा में जाते हैं ना लॉर्डशिप. स्केल 4 की पोस्ट राजभाषा के लिए भी है. राजभाषा की वैकेंसीज कहाँ है? वैकेंसी जनरल बैंकिंग में. तो जनरल बैंकिंग में अप्लाई. नहीं, अगर ऐसा होता तो ये पैरा नंबर 7 नहीं आता लॉर्डशिप. पैरा नंबर 7 जो लिखा है एनेक्सर 1 में, अगर ऐसा होता तो वो नहीं आता. ये देखिए, ये पोस्ट है जनरल बैंकिंग की. स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इफ दे वांट टू कम इन जनरल बैंकिंग कैडर, दे आर हैविंग ए ऑप्शन. आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा पैरा 7 के हिसाब से. देखिए, हमने पेपर क्लियर किया ना लॉर्डशिप. हम बाद में अपियर हुए और हमने पास भी किया लॉर्डशिप. you are still you will have to qualify 50% questions of general banking. हमने किया ना लॉर्डशिप. हमारे 51 मार्क्स थे. लेकिन ये पोस्टिंग कहाँ होनी थी? जनरल बैंकिंग में होना थी. वो करते तो हम एक्सेप्ट करते हैं लॉर्डशिप. हमारे लिए ऑप्शन नहीं था. ये तो हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए दिया कि एक बार हमको पता चले, अदरवाइज हमको पोस्टिंग देते तो हम जाते. इसमें लिखिए, by way of this petition, the petitioner has But challenged my lord, he did not appear for the challenge the orders annexure P3 and P27. अब जबलपुर से बाहर से P27 point by the order annexure P3, the select list in pursuance to promotion process initiated in the year 2017 has been issued promoting P3 officers to scale 4 point by the order annexure P27. The select list / promotion list for promotion to scale 4 has been issued in pursuance to promotion process carried out in the year 2018. 2017 के लिए नहीं लॉर्डशिप. Rising of 102 officers who have been declared fit for being promoted. Point. एक 17 का, एक 18 का है. नहीं, वो 18 के लिए, ये 17 का हम नहीं, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन. 17 के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हमारा लॉर्डशिप. वो 18 के लिए, 18 के प्रोसेस के लिए. ठीक है ना, समझ लिया. 17 में हम प्रमोट हुए हैं. समझ लिया. हमें लिखाने दी. नेक्स्ट, the petitioner has contended that the petitioner was though appointed as a general clerk in the bank, but in the year 2003 he was so far as the process of the year 2017 is concerned, from the petitioner contends that as many as
157 vacancies were advertised in scale 4 and the petitioner had duly applied in the said process point as per the assessment criteria as laid down in paragraph 5 of the notification annexure P1. The written test, there were total 100 marks, out of which 25 were for written test, 25 were for appraisal reports, 10 were for group discussion, and 40 were for interview. My lord, it's an intervention. Marks are 25 and 25. Marks were 25 and 25, and for the exam, he was to get 50%, and even for this interview, he was to get 50%. That means for the written exam, he got 12.5, that is 50%. But in the interview, instead of 12.5, he got 10, that is 40%. Because of it's like that. नहीं ये गलत रिटन टेस्ट के 35 कर दीजिए अप्रेजल रिपोर्ट के 35 नहीं इसमें 65 एक मिनट नहीं मालूम if you kindly see मालूम page number 19 is page number 19 written test minimum marks for clearing general candidate 50%. So 50%, but the total marks of full marks was 25. Out of that 50%, that means he was to get 12.5 when he got that in 2017. And 40% in interview. Different marks were prescribed for written test, appraisal reports, group discussion and interview. Point. It is contended that the marks for interview were excessive and were beyond the requisite criteria. इंटरव्यू के 25 मार्क्स थे कि 40 थे 40 और 10 ग्रुप डिस्कशन के 10 40 but he got less than that only for that particular and he got 10 there's a directly reply also it was decided it was specifically mentioned in that particular letter that why he could not be excessive in as much as for interview 40 marks were prescribed out of total 100. There is actually P12 mark. And it was beyond 25% maximum permissible marks which can be allotted to interview because allotment of more than 25% marks to interviews would lead to bias and arbitrariness in the selection/promotion process. Point. Next, the petitioner has further argued that the petitioner on P12, everything is verified. On P12, that is page number 35, the committee has taken review of the matter and after examining the representation dated 26/9/2017 and the relevant record of the promotion process 2017 for promotion for scale 3 to 4. that the petitioner was wrongfully not selected and even the bit list issued by the annexure P3 does not indicate the number of marks secured by each of the candidates and therefore it violates the human resource policy annexure P31. Point. Next, the respondents have filed reply and in the reply it is contended that since in the notification annexure P1 40% minimum marks were required to be obtained in interview from the petitioner in fact obtained only 10 marks out of 40 which is 25% and therefore since he did not secure 40% marks in interview hence he was not selected for promotion to scale 4. Point. Next, in response to various averments of the petitioner that the petitioner's representation were closed without being considered on merits, it is contended by the respondents that subsequently while annexure P12, the grievance of the petitioner was considered on merits and he was intimated that since he did not obtain 40% marks in interview, therefore he has not been selected for promotion and therefore the action of the bank in the matter is not arbitrary. Point. Next, so far as the selection of 2018 is concerned, the ground of the petitioner is that he was not relieved by the bank for appearing in the interview
Point. Therefore, the process is initiated, and therefore his non-selection in the process of 2018 is vitiated, and the select list annexure P21 be interfered with. Point. Next. This was countered by the respondents by stating that the petitioner willfully abstained from appearing in the interview scheduled at Pune on 24/4/2018 and wrote P26 refusing to appear in the interviews. Next. Third. Next, so far as the selection of the year 2017 is concerned, this whole question that arises is that the petitioner secured less than minimum marks in the interview, which were fixed at 40%. Point. It is undisputed that the said criteria was there at the time of notification of vacancies by annexure P1 dated 26/5/2017, and the petitioner appeared in the process with open eyes without challenging the process or notification of vacancies at the relevant time itself. Point. He participated in the process, and after getting hit by the clause requiring 40% in interviews, he has now challenged the action of the bank. Point. Next, it is settled in law that rules of the game cannot be changed after start of the process. Point. The petitioner appeared in the process with open eyes, and after suffering disqualification and rejection, is now challenging the requirement of minimum 40% marks in the interviews. Point. All the candidates have in the process, and select list has been issued. Point. The petitioner is clearly stopped from challenging the marking criteria at this stage. लॉर्डशिप हमने उसको चैलेंज नहीं किया है. वो हमें जो समझ में आ रहा है हम वो लिखा जी. at this stage. Point. Kindly see dot करके छोड़ दीजिए. Next. So far as the other contentions of the petitioner that the respondents have remained elusive in the matter, and the actual assessment sheet of interviews has not been produced before this court is concerned, in the opinion of this court, once the respondents have disclosed the interview marks of the petitioner on affidavit and have disclosed that he obtained 10 marks out of 40, there is nothing to disbelieve this assertion of the respondents once the petitioner has not placed any material on record to show that this assertion has to be disbelieved. Since has not worked in general banking since 2003, it will not be possible for him to perform the work of general banking, and he should be considered for being promoted to Raj Bhasha cadre because he is working in Raj Bhasha cadre since the year 2003. Point. Next, the petitioner has also argued that in fact he was transferred to Raj Bhasha cadre, which was countered by the respondents contending that he was in the general banking cadre, but work of Raj Bhasha was being taken from the petitioner. Point. This court refrains from entering into this arena, but this court does take cognizance of assertion of the petitioner in letter annexure P26 that it is not possible for the petitioner to perform the work of general banking, and he prayed that he be considered for being promoted under Raj Bhasha cadre as a scale 4 officer. Point. Next, as the vacancies were of scale 4 in general banking, which were open for specialist officers as well as 2 general banking officers, and the petitioner in annexure P26 has admitted that it is not possible for him to perform the duties of general banking, therefore no interference in the matter of non-promotion of the petitioner
to scale 4 general banking post can be made. Point. Next, the assertion of the petitioner that he is unable to perform the work of general banking duties would hold good even for 2017 process, and on the assertions made in the representation in Annexure P26, the petitioner seems to be lightly rejected by the interview board as he himself had misfit to do the work of scale 4 officer in general banking duties. Point. Next, consequently, no interference can be made in the petition fails and is dismissed. Lordship, last day, I think. Next case. Hon'Ble. My lord, on last date of hearing, my lord, respondent number 4 has informed, my lord, counsel for respondent number 4 has informed that, my lord, Kastur Chand at Gardni Secondary School is closed, my lord. Yes. And my lord, now no, my lord, I am playing a week's time to implead, my lord. The counsel for petitioner further seeks 1 week's time to file a